Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the fourth lecture of the Indian Constitution. In today's lecture, we would start with the evolution of judicial concept of basic structure. In this, write down the first case. यूपी मेंस में आ चुका है ये सवाल. First case write down. कामेश्वर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार. कामेश्वर प्रसाद सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1950 पटना हाई कोर्ट. So this is one of the major important topic. It was held, write down, it was held in this case, it was held that the Bihar Land Reform Act was unconstitutional as it violates the Article 19(1) clause F, 19 clause 1 subclause F and Article 13 clause 2. So it was held unconstitutional because it is violative of 19(1)F and 13 clause 2. It violates these two articles. Now take out 13 clause 2. Article 13 clause 2. The state shall not make any law which takes away or abridges. The state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this part. Not make any law which takes away or abridges. तो स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा which takes away means repeals. Takes away means repeals. The state shall not make any law which repeals, takes away or abridges. Abridges मतलब restricts, which repeals or restricts the right conferred by this part. This parts mean what? Fundamental rights. Rights conferred by the chapter of fundamental rights. And any law made in contravention of this clause shall to the extent of the contravention be void. So what they are telling in Article 13 clause 2 is that the day on which the constitution came into existence, that is in 1950, 1950 में constitution existence में आया था. So obviously उसी time से fundamental rights also came into existence in 1950 itself. 26 जनवरी 1915 को fundamental right भी existence में आ गए. Now 13 clause 2 is saying कि इसके बाद constitution के लागू होने के बाद, after the commencement of the constitution, if any law is made by the parliament or the state legislature and that law takes away any of the fundamental rights or restricts negatively the fundamental right, any of the fundamental right, then that law would be void to the extent of contravention. अगर आपने कोई ऐसा लॉ बनाया है जो फंडामेंटल राइट को नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है, सो व्हाट दे आर सेइंग इज एनी लॉ व्हिच इज मेड, कोई भी लॉ, वेदर इट इज बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और बाय द पार्लियामेंट and which is violative of the fundamental rights, either takes away or restricts the fundamental rights, then that law will be void to that extent. Article 13 clause 2 is talks about post constitutional law. It talks about post constitutional law. मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के बाद कोई भी लॉ बनेगा, so that law will be void if it violates the fundamental rights. Now you see, the Bihar Land Reform Act was made for the purpose of compulsory acquisition of the land from the zamindars and the big landowners. अब एक तरफ तो आपने बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाया, उसका पर्पस भी अच्छा था, लेकिन दूसरी तरफ आपने 19(1)F दे रखा है एज ए फंडामेंटल राइट. और फंडामेंटल राइट 19(1)F में पहले दे रखा था द राइट टू प्रॉपर्टी. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं जमींदार हूँ, then I am having a right to own my property. Then how can you take it away from me? My fundamental rights under 19(1)F is protected and 13 clause 2 protects this fundamental right. 19(1)F में मेरा fundamental right and 13 clause 2 protect it by declaring that I have got the right to property, and if I have got the right to property, then there cannot be a law which takes away my right to property. And on the other hand, Bihar Reforms Act is taking away my right to property, क्योंकि इस एक्ट में लॉ में कहा गया है कि आप कंपलसरी एक्विजिशन कर सकते हो, लैंड का कंपलसरी एक्विजिशन कर सकते हो. सो इट इज वायलेटिव ऑफ 19(1)F फंडामेंटल राइट, और 13 clause 2 कहता है ऐसा लॉ वॉइड होगा. और इसी बेसिस पर कामेश्वर प्रसाद सिंह में सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया कि दैट द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट
सॉरी, पटना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था, नॉट सुप्रीम कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया था दैट द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। नाउ द नेक्स्ट केस इज शंकरी प्रसाद देव वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951 सुप्रीम कोर्ट, जजमेंट डिलीवर्ड बाय पतंजलि शास्त्री जस्टिस। अब देखो हुआ क्या, जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को अल्ट्रा वायस डिक्लेयर कर दिया पटना हाई कोर्ट ने, उसके बाद हमने फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट पास किया। वी पास द फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट दैट इज इन 1951 and as per the first amendment act we introduced in the constitution 31A, article 31A and 31B, and article 31B is read along with 9th schedule। 31A आर्टिकल 31A ऐड किया एंड 31B ऐड किया। 31B is read with 9th schedule। 31A में broadly what they wrote was, अब तो ये अमेंड हो गया है लॉट, बट इनिशियली what they wrote was, अब देखो 31A B ये सब कहाँ पे है, पार्ट 3 में, और पार्ट 3 क्या है, चैप्टर ऑन फंडामेंटल राइट्स। सो 31A was created as a saving clause, 31B also created as saving clause। अब सोचो उसी चैप्टर में जिसमें फंडामेंटल राइट्स दे रखे, the same chapter in which the fundamental rights are given, in the same chapter you have added some saving clause। Now in the same chapter you have 19(1)(f) which says the right to property, you have 13 clause 2 which says that there should not be a restriction or abridges of fundamental rights, otherwise the law will be void। अब उसी चैप्टर में हमने अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन करके वी हैव एडेड 31A एंड 31B। 31 says in brief that any law which is made for the purpose of development and provides for acquisition of property, then that law, since it is a progressive law and which is for the purpose of development, that law will not be unconstitutional merely because it was आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 14। अगर कोई एक लॉ है जो ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट उसके लिए बनाया गया है एंड प्रोवाइड्स फॉर कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, देन दैट लॉ विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल merely because it is violating the right to property and right to equality, आर्टिकल 14 एंड 19। तो आप इसको पढ़ना, ब्रॉडली यही मीनिंग है इसकी। 31B कहता है that any such law which is put into 9th schedule will be beyond the scope of judicial review। मतलब कोई भी लॉ अगर आप बनाकर 9th शेड्यूल में डाल दोगे तो उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो बेसिकली पर्पस क्या था इस अमेंडमेंट का, पर्पस ये था कि जैसे हमने कोई लैंड रिफॉर्म एक्ट या फिर कोई भी ऐसा प्रोग्रेसिव लॉ बनाया और एक्विजिशन ऑफ लैंड को कंपलसरी बनाया, तो 31A एंड 31B सेविंग क्लाउज, अगर वो लॉ राइट टू प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा होगा, देन इन 31A that law is valid because it is saved, and when you put it into the 9th schedule then it is beyond the scope of judicial review and no one can challenge that। So we created that additional tool, we created a additional tool for the purpose of protecting that kind of progress or development oriented laws। That was first amendment, that was by the first amendment 31A and 31B। और आपका शंकरी प्रसाद जजमेंट है उसमें फर्स्ट अमेंडमेंट वाज चैलेंज्ड। इन द शंकरी प्रसाद जजमेंट द फर्स्ट अमेंडमेंट वाज चैलेंज, मींस हमने जो फर्स्ट अमेंडमेंट करके 31A 31B 9th शेड्यूल जो ऐड किया है, दिस एंटायर थिंग वाज चैलेंज। अब सुप्रीम कोर्ट चाहती तो कह सकती थी दैट दिस फर्स्ट अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट फर्स्ट अमेंडमेंट इज a law of amendment, whereas Article 13 Clause 2 applies only upon ordinary laws and not upon amending laws। So first law is the law of amendment, जो फर्स्ट अमेंडमेंट है हमारा लॉ ऑफ अमेंडमेंट है, जबकि आर्टिकल 13 क्लॉज 2 अप्लाई करेगा खाली उन्हीं लॉ पर जो ऑर्डिनरी होंगे, और ये अमेंडिंग लॉ पर नहीं अप्लाई करेगा। तो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 क्या कहता है, किसी भी फंडामेंटल राइट को आप रेस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, और 31A और 31B क्या कर रहा है, फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है। इट इज सेविंग एनी सच लॉ विच टेक्स अवे द राइट टू प्रॉपर्टी। सो इन ए वे 31A is conflicted with 13 clause 2
any law you make and take away the right to property or restrict the right to property, you put that into the ninth schedule and it will be protected, and that is saved under 31A also. Whereas 13 clause 2 says that you cannot make a law which takes away or abridges the fundamental rights. So there is direct conflict between 31A and 13 clause 2, और इसी बेसिस पे चैलेंज किया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट को, that by bringing about the first amendment you are restricting article 13 clause 2, which you cannot do because 13 clause 2 prohibits the restriction upon the fundamental rights. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में सिंपल सा एक आंसर दिया, वैसे तो बहुत बड़ा जजमेंट है बट सिंपल आंसर दिया that 368 में जब हम amendment of the constitution करते हैं then that amendment is a superior law. Law of amendment is a superior law and that is not a ordinary legislature. जबकि 13 clause 2 जो कह रहा है no law shall contravene, तो वो जो law है 13 clause 2 में that is a ordinary legislation and not the law of amendment. And that way the Supreme Court held कि 13 clause 2 का restriction amending law पर नहीं लगेगा, ordinary legislations पे लगेगा. Therefore 31A और 31B is not hit by 13 clause 2 because they have been added by amendment. So basically the issue was a superior law is not to fall under 13 clause 2 and therefore the restriction of 13 clause 2 will not apply upon that superior law, and superior law is what? The law of amendment. So write down, whenever a law is made which restricts the fundamental rights, the prohibition of article 13 clause 2 will apply, but the word law under article 13 clause 2 is only for the ordinary legislation and it does not include the laws of amendment. Full stop. Amendment of Constitution under Article 368 is superior law and will not be hit by Article 13 clause 2. Therefore, the First Amendment cannot be said to be violating Article 13 clause 2 and hence it is not unconstitutional. So this is the second case in line, शंकरी प्रसाद. पहला जजमेंट था बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट को कामेश्वर प्रसाद सिंह केस में अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया. क्यों? बिकॉज दैट लॉ इज वायलेटिंग आर्टिकल 13 क्लॉज 2. फिर उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए they went on to amend the constitution. They have added 31A and 31B plus the 9th schedule. Then that amendment itself is challenged on the ground that this amendment itself violating the article 13 clause 2. पहले में the Bihar Land Reforms Act was a law that was violating article 13 clause 2. Now this amendment itself is violating article 13 clause 2 because it is restricting article 14 and 19, because it clearly says that any law which talks about acquisition of property will not be unconstitutional only because it affects article 14 and 19. So that is a violation of article 13 clause 2 and therefore it is challenged in this case. Then the Supreme Court clearly held कि 13 clause 2 में जो वर्ड लॉ लिखा हुआ है उसमें ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन आएगा लेकिन अमेंडमेंट वाला लॉ है वो नहीं आएगा. Therefore, when you amend the constitution in 368, that is a superior law, that is amending law, and that will not fall under the word law under 13 clause 2. Therefore, 13 clause 2 is not affected by amendment of the constitution. Therefore, the first amendment was valid. इसके बाद इन्होंने क्या किया? Things went on. उसके बाद फिर 17th amendment आया. अब 17th amendment कुछ खास नहीं है. 17th amendment करके इन्होंने बहुत सारे land reform laws 9th schedule में डाला. The parliament amended the constitution by the 17th amendment and they put several land reform laws in the 9th schedule. क्योंकि 9th schedule में कोई भी लॉ डालने के लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा. 9th शेड्यूल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और डायरेक्टली उसमें कोई लॉ नहीं डालोगे. इफ यू रिमेंबर 31B क्या कहता है कि एनी लॉ व्हिच इज पुट इनटू द 9th शेड्यूल इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ जुडिशियल रिव्यू. तो आपको किसी लॉ को जुडिशियल रिव्यू के स्कोप से बाहर करना है तो यू विल हैव टू फर्स्ट पुट दैट इनटू द 9th शेड्यूल. और 9th शेड्यूल में आप वैसे ही लॉ नहीं डाल दो. 9th शेड्यूल इज द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. एनी लॉ you want to put into the 9th schedule
you have to first amend the 9th schedule. That is, you have to amend the constitution. What did they do? It was 17th amendment करके इन लोगों ने 9th schedule में they put laws. They put several laws. Now once again, this amendment and the very first amendment was challenged. एक बार फिर से in the सज्जन कुमार case, in the case of Sajjan Singh versus State of Rajasthan. Sajjan Singh versus State of Rajasthan, 1964 Supreme Court. So write down what was held in this case. एक्चुअली जो साइटेशन है कई सारे आप देखोगे तो इसमें 65 लिखा है, तो कई सारे साइटेशन से आप देखोगे तो उसमें 65 लिखा हुआ है, पर जजमेंट 64 में आया था। तो जिस ईयर में जजमेंट आया था, सो 1964 सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है और 30 अक्टूबर को आया था ये जजमेंट। इन दिस केस द 17th अमेंडमेंट विच हैड पुट सर्टेन लॉज, कौन से वाले लॉ? लैंड रिफॉर्म लॉज, which had put certain laws in 9th schedule was challenged. The Supreme Court, the court on the same grounds as in Shankri Prasad held that the law of amendment is superior law and it is not violative of Article 13 Clause 2. The law of amendment is superior law and it is not violating of Article 13 Clause 2. Means 17th amendment is not unconstitutional. अब देखो 1951 में फर्स्ट अमेंडमेंट आया था जिसमें 31A, 31B और 9th शेड्यूल हमने ऐड किया था। 1951 के बाद शंकरी प्रसाद जजमेंट, फिर सज्जन सिंह जजमेंट, 1964 में सज्जन सिंह, और सज्जन सिंह में जो जजमेंट डिलीवर्ड किया गया था दैट इज फ्रॉम बाय गजेंद्र गडकर जस्टिस। गजेंद्र गडकर जस्टिस, कैपिटल लेटर्स में लिखना, बाय मिस्टेक लिख दिया स्मॉल में। एंड इन दिस शंकरी प्रसाद में पतंजलि शास्त्री जस्टिस ने जजमेंट डिलीवर किया था। सो फर्स्ट अमेंडमेंट के बाद लगभग 14 साल 1964 तक, 14 years फ्रॉम द डेट ऑफ अमेंडमेंट द लॉ वाज कंटिन्यू। व्हाट लॉ? 31A, 31B, 9th शेड्यूल। सो इन 14 सालों में, इन 14 years में बहुत सारे लैंड रिफॉर्म्स एक्ट बनाए हुए होंगे। मैनी लैंड कंपलसरी एक्विजिशन हैज बीन टेकन, लोगों की जमीन ली गई होंगी जबरदस्ती, ब्रिजेस, डैम्स और रेलवे लाइंस वगैरह ये सारी बनाई गई होंगी, तो कंस्ट्रक्शन के लिए किसी न किसी की जमीन तो ली गई होंगी। सो इन दीज ईयर्स बिकॉज 31 एंड 31B, 31A डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल, तो इन 14 सालों में इवन मोर देन 14 years, क्योंकि बाद वाला जजमेंट 1967 में आया है। So all that while several people's land may have been acquired and on that several kinds of construction for development may have been done. अब एक एग्जांपल ले लो, मान लो कोई जमींदार था, उसके पास 5000 एकड़ जमीन था। अब आपके 5000 एकड़ जमीन में से मान लो उन्होंने 4500 एकड़ जमीन ले लिया, ऑब्वियसली कंपनसेशन तो देंगे, फ्री में तो लेंगे नहीं। अब 4500 एकड़ जमीन में किसी जमीन में उन्होंने डैम बना दिया, किसी पार्ट में कुछ और प्रोजेक्ट बना दिया, कुछ जमीन है उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया उन किसानों को जो landless हैं। In that way they have used that land in these years. Now come with another judgment that is in 1967 and that has declared that the first amendment was unconstitutional. 1967 मतलब 17 साल। 1967 में you got the Golaknath versus State of Punjab in which the Supreme Court declares 11 judges bench with 6-5 majority. Supreme Court declares that the first amendment was unconstitutional. अब सोचो कि 17 साल बाद कोई कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे कि फर्स्ट अमेंडमेंट वाज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, मींस व्हाट? 31A and 31B and 9th schedule are unconstitutional. Then what will happen? अब ये 31A, 31B, 9th schedule अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया, तो अब क्या होगा? All those zamindars, all those people whose lands were acquired, they will run after the government now कि वो जो अमेंडमेंट है वही अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तुमने मेरी जमीन ली वो वापस लाओ। मतलब अगर डैम बना दिया उस जमीन पर तो डैम समेत मेरी जमीन वापस कर, बिल्डिंग बना दी तो बिल्डिंग समेत मेरी जमीन वापस कर, रेलवे लाइन बना दिया तो रेलवे लाइन हटाओ। So would it not result into great consequences? Because all these years, 16-17 years, you are acquiring lands
as per the judgment in Shankri Prasad and Sajjan Singh, and you are using that land on several development purposes. Now, after 17 years, the judgment comes and says that the First Amendment itself was unconstitutional, and therefore will it not result into for all those peoples whose lands were acquired asking their land back, and that is a case that will result into grave consequence because it is not possible for government to giving the land back, and therefore कोर्ट ने इसमें एक अच्छी बात करी. उन्होंने ये कह दिया कि दैट जजमेंट of Shankri Prasad and Sajjan Singh are overruled, declaring the First Amendment unconstitutional, but the overruling is done only prospectively. Prospectively का मतलब है कि आज जब हम जजमेंट पास कर रहे हैं गोलकनाथ में, उस दिन और उसके बाद के लिए वो पास कर रहे हैं. पहले जो हो चुका है उसको हम नहीं छेड़ेंगे. So whatever has done under those judgments already, they will not be touched upon. It is not a retrospective overruling. Retrospective मतलब जिस दिन शंकरी प्रसाद जजमेंट आया उसी दिन से ओवररूल हो गया. तब तो जो भी हुआ है सब आपको वापस करना पड़ेगा. Prospective overruling means that I am overruling. Supreme Court says that we are overruling these judgments not from the back date but from today. And therefore now onward you cannot acquire land under 31A, 31B, etc. तो अब आप एक लैंड एक्वायर नहीं कर सकते इसके बाद, बट जो पहले हो चुका है वी कैन नॉट अनडू दैट. पहले वाली चीजों के पहले वाले एक्ट्स के उन एक्ट्स पर पहले जो हो चुके हैं दिस जजमेंट विल नॉट अप्लाई. सो दैट इज द केस ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग. सो राइट डाउन द केस दैट इज C Golaknath versus State of Punjab 1967 Supreme Court. It was 6-5 majority. 6 is in the favor of the judgment. Total 11 judges थे, and the judgment is delivered by Subbarao, Chief Justice. So write down. It was held that amendment of Constitution is not a superior law. Rather, it is also an ordinary legislation, and it falls within the word law under Article 13 Clause 2. And therefore, even the law of amendment will be hit by Article 13 Clause 2. And therefore, even the law of amendment will be hit by Article 13 Clause 2. The court therefore declared that the First Amendment was unconstitutional. Declared that the First Amendment was unconstitutional. Why? Because First Amendment restricted 13 Clause 2. Because First Amendment restricted 13 Clause 2. Because 14 और 19 को restrict करने के लिए 31A में permission दिया जा रहा है. Therefore, it is restricting 13 Clause 2 and therefore it is unconstitutional. And accordingly, the court overruled the Shankri Prasad and Sajjan Singh judgments. However, in order to avoid the grave consequences of a retrospective overruling, the court declared that the overruling of these cases will be prospective. So अब तक हमने जो देखा पढ़ा जो मेन इशू था that is in Article 13 Clause 2, in which it is written there cannot be a law made which takes away or abridges the fundamental rights. So there is clear prohibition. The various fundamental rights are provided in part 3 और उसमें एक article है which makes a clear declaration that there cannot be a law made by the parliament or the state legislature, and that is implicit. Law parliament बनाएगा, state legislature बनाएगा, these two will make the laws. So there cannot be a law made which takes away or abridges the fundamental rights. So they are providing the extra protection to the fundamental rights. तो यही तो पर्पस हुआ कि that we are protecting the fundamental rights and there cannot be a law which takes away or abridges the fundamental rights. Takes away मतलब repeals और abridges मतलब restricts. So that way the Article 13 Clause 2 provides clear protection to all the fundamental rights, and therefore the state cannot make any law which takes away or abridges the fundamental rights. तो इतना तो clear हो गया. So now you see, as a matter of fact, you are having so many fundamental rights. You have got Article 14, 15 and so forth up till Article 35 tak. So we have
all those fundamental rights that relevant up till 30 तक है, आर्टिकल 30 तक fundamental rights. So the important ones are up till 30. तो आप इनमें से किसी भी आर्टिकल में लॉ बनाकर फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते. दैट इज व्हाट आर्टिकल 13 क्लॉज 2 सेज. सो दैट प्रोवाइड्स अ स्पेशल काइंड ऑफ प्रोटेक्शन टू द फंडामेंटल राइट. सो कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को इफेक्ट नहीं करना चाहिए. एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 19(1)(f was a fundamental right then, which provided the right to property. And Article 14 was a fundamental right, and it is also a fundamental right today also, which provides the right to equality. अब मान लो आपने एक लॉ बनाया, the parliament or the state legislature makes a law, and it says that all जमींदार्स beyond the particular ceiling limit, मान लो कोई भी जमींदार 50 एकड़ जमीन रख सकता है, उसके ऊपर की जितनी भी जमीन है हम सरकार ले लेगी, ऐसा कोई लॉ बनाया. मीन्स दे आर कीपिंग ए सीलिंग लिमिट एंड दे से व्हाटएवर इज एक्स्ट्रा लैंड जमींदार हैज गॉट वी विल एक्वायर दैट फ्रॉम द जमींदार. तो लैंड एक्विजिशन के लिए हमने एक लॉ बनाया. ऑब्वियसली द स्टेट कैन मेक ए लॉ. तो अगर स्टेट लॉ बना सकता है तो इट कैन मेक लॉ फॉर लैंड एक्विजिशन आल्सो. और स्टेट ने लॉ बना दिया कि एक लिमिट के बियॉन्ड आप जमीन नहीं छोड़ सकते, वी विल एक्वायर दैट फॉर वेरियस पर्पसेस, for constructing road, dams, railway, redistributing the land to landless people, river, ponds, grazing land for animals, cows, for schools, hospitals. So इन सब के लिए गवर्नमेंट डिक्लेयर करके अपने लैंड एक्वायर कर ली. So the moment the government make this law for acquisition, it will come to conflict with Article 19 or not, because Article 19 guarantees the fundamental right to property. अगर किसी के पास 1000 एकड़ का लैंड है, by the fundamental right he has right to acquire that land. तो किसी व्यक्ति के पास fundamental right है to have that much of land which he already has, या फिर और खरीदना चाहे तो, because he is having right to property and no one can take away that land from him as per the fundamental right. Whereas the law that the state is making, for example Bihar Land Reform Act, and the Bihar Land Reform Act is you know that it is basically for the land acquisition. अब ये जो law बना था, is it not taking the land from that person which is guaranteed under fundamental right? Plus a question always arose that you are making an unequal treatment, because if I am a zamindar, you are making only the laws against the zamindar. Why not against any other person? So are you not violating the principles of equality? आप एक जमींदार के साथ unequal treatment कर रहे हो, because you are taking away the lands of only of zamindar but not of the others. So on one hand you are violating the right to property, my right to property, by taking away the land, and on the other hand you are also doing the unequal treatment to me, because I am zamindar, by taking only my land and not the land of other people. So in that way जो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट है, कोई भी ऐसा लॉ जो कंपलसरी लैंड एक्विजिशन की बात करता है, that is affecting the right to property of the person and also affecting the right to equality. Okay. Article 13 clause 2 क्या कहता है? Article 13 clause 2 clearly says that the moment you make a law which takes away or abridges the fundamental rights, the moment you make a law which takes away or abridges the right to property, because it is also a fundamental right, the law will be void to that extent. The Bihar Land Reform Act is provided for the acquisition of the land of zamindars and also the princely states, जो पुराने princes थे, rulers थे, उनका भी land, and therefore it is affecting the right to property and right to equality, and therefore it is violating Article 13 clause 2, because 13 clause 2 says that you cannot make a law to take away the right to property or right to equality, a very fundamental right, or any fundamental right does not matter, and therefore to the extent of violation of 91F, Article 19(1)(f and Article 14, that particular law will be unconstitutional. जैसे ही आप मेरे राइट टू प्रॉपर्टी को अफेक्ट करोगे, राइट टू इक्वालिटी को अफेक्ट करोगे, जिस लॉ से आप वो अफेक्ट कर रहे हो, 13 क्लॉज 2 का वायलेटिव माना जाएगा. और 13 क्लॉज 2 क्या कहता है कि स्टेट कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो कि फंडामेंटल राइट्स को टेक्स अवे या एब्रेजेस करे, एंड देयरफॉर you will declares that law unconstitutional. That is what the Patna High Court in Kameswar Prasad is done. On the ground of 13 clause 2, it declared the Bihar Land Reform Act
to be unconstitutional. अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, लैंड एक्विजिशन की जरूरत क्यों पड़ी? So what is the need of land acquisition? Now take out the Article 37 in Part 4 of DPSP. Part 3 is fundamental rights and Part 4 is DPSP. And the provisions contained in this part, that is the Part 4 of DPSP, shall not be enforceable by any court. मतलब आप किसी डायरेक्टिव प्रिंसिपल को कोर्ट में जाके एनफोर्स करवाना चाहते हो, so that you cannot do. But the principle therein laid down are nevertheless fundamental and governance of the country. Means the principles laid down in the DPSP are fundamental in the governance of the country, and it shall be duty of the state to apply these principles in making the laws. So the provisions contained in this part, that is Part 4 DPSP, shall not be enforceable by any court. मतलब आप किसी DPSP को कोर्ट में जाकर किसी कोर्ट में जाकर एनफोर्स करवाना चाहते हो, so that you cannot do. But the principles therein laid down are nevertheless fundamental in the governance of the country. Means the principles laid down in the DPSP are nevertheless fundamental in the governance of the country, and it shall be मतलब mandatory. It shall be mandatory, the duty of the state. It shall be the duty of the state to apply these principles in making laws. So what I am trying to telling you here means अगर फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेट होंगे तो आप डायरेक्टली एनफोर्स कर लोगे आर्टिकल 32 में, आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट में एनफोर्स कर लोगे. लेकिन डीपीएसपी को यदि आप एनफोर्स करवाना चाहते हो तो डीपीएसपी को एनफोर्स करवाने के लिए आप रेड फाइल नहीं कर सकते. So that is what they are saying. But at the same time they are saying that does not mean that the DPSP are less important. DPSP also are fundamentals in the governance. Means the government has to implement the DPSP in the governance of the country, in the governance of the people, and also it shall be their duty. Obviously the constitutional duty. It shall be their duty. और क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, so it is constitutional duty that to implement the DPSP in their law making. मतलब जो भी DPSP यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स लिखे गए हैं उनको आपको लॉ बनाकर लागू करना चाहिए. That is the duty put upon the state. लेकिन साथ में ये भी कह रही हैं अगर कोई इंडिविजुअल इनको एनफोर्स करने के लिए, जैसे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, अगर कोई व्यक्ति यूनिफॉर्म सिविल कोड को एनफोर्स करने के लिए अगर रेड डालना चाहे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करो, इट इज नॉट एनफोर्सेबल. लेकिन ड्यूटी ऑफ द स्टेट ये है कि धीरे धीरे यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपने लॉ में इम्प्लीमेंट करे, धीरे धीरे अपने लॉ में इम्प्लीमेंट करे. ये स्टेट की ड्यूटी है यूनिफॉर्म सिविल कोड को. एंड देयरफॉर द स्टेट विल ग्रेजुअली make laws which will implement the policy of uniform civil code, and that the state is gradually doing. But if I want or you want to go to court to enforce the requirement of uniform civil code, we cannot do it. That is what this article says. Means what comes out is, and enforceability वाले point को अभी हटा दो फिलहाल. Does it not come out? State is duty bound. State is constitutionally duty bound to implement these principles, directive principles in the state, and that it does, it should do by making laws. वैसे एफआर फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी का रिलेशनशिप हम बाद में पढ़ेंगे, बट फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि that DPSP are not futile. DPSP are also have to be implemented by the state in making the laws, and through laws you have to implement the DPSP. That is also a constitutional duty, and the state on the other hand also to ensure has to ensure that the fundamental rights should not be violated through the laws, because Article 13 Clause 2 says so. मतलब दो पॉइंट आ गए. एक, स्टेट की यह ड्यूटी है कोई भी ऐसा लॉ ना बनाए जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता हो, 13 क्लॉज 2 में लिखा. और दूसरा, स्टेट की ये ड्यूटी है कि डीपीएसपी जितने भी हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉज बनाए और उन लॉज के थ्रू डीपीएसपी को इम्प्लीमेंट करे. नाउ लेट्स सी आर्टिकल 38. द स्टेट shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political shall inform all the institutions of the national life. मतलब स्टेट की ड्यूटी है कि सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल जस्टिस को प्रमोट करे इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द
life of the Indian society. So for that purpose, it will make laws to promote socio-economic and political justice. Now we talk about the economic justice. Is it not the duty of the state to implement the policy of the economic justice between the people by making laws as per Article 38? क्या यह स्टेट की ड्यूटी नहीं है कि वो इम्प्लीमेंट करे प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक जस्टिस को बाय मेकिंग लॉज, जिससे इकोनॉमिक जस्टिस लाया जा सके बिटवीन द सोसाइटी? लिखा है ना 38 में। अब अगर लार्ज स्केल वेल्थ का इनइक्वालिटी हो इन द इंडियन सोसाइटी, देयर इज लार्ज स्केल इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ, कोई जमींदार है, कोई राजा है, किसी पे हजारों एकड़ जमीन है और कोई भूमिहीन किसान है. There are landless farmers. On the other hand, there is a person having 1,000 acres of land. Is it not a economic injustice? Is it not therefore the duty of the state to implement the policy of economic justice? And therefore is it not impliedly the duty of the state to bring about the equality in distribution of land to a reasonable extent? जैसे कि अब किसी जमींदार के पास 1,000 एकड़ जमीन है, उससे लैंड लेकर और किसी लैंडलेस पर्सन को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, थोड़ा बहुत तो इकोनॉमिक जस्टिस होगा, क्योंकि किसी के पास तो 1,000 एकड़ जमीन है और किसी व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं है. अब फिलहाल राइट टू प्रॉपर्टी को भूल जाओ, खाली डीपीएसपी की बात करें. 1,000 एकड़ जमीन वाले से कुछ जमीन लेकर, कंपलसरी लेकर, और लैंडलेस लोगों के पास अगर जमीन डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कुछ हद तक तो इकोनॉमिक जस्टिस हो सकता है. एंड दैट इज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू इम्प्लीमेंट दिस पॉलिसी. सो स्टेट हैज टू डिसाइड इट्स मैकेनिज्म that how it will implement the policy of economic justice. Now let's see clause 2. The state shall in particular strive to minimize the inequalities in income and endeavor to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst group of people residing in different areas or engaged in different vocations. So the inequality of income को दूर करने के लिए the state has the duty and this policy also has to be implemented through laws. Now read the article 39. The state shall in particular direct its policy towards securing the citizens, men and women equally have the right to an adequate means of livelihood. अब clause B और C को ध्यान से पढ़ो. That the ownership and control of the material resources of the community are so distributed as best to subserve the common good. अब material resources में land resources आएगा कि नहीं? Land resource will also be a material resource. The ownership of land resources therefore is to be so distributed so that it works for the common good of all. Then clause C, that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment. Means wealth का concentration भी नहीं होना चाहिए. Mind all these are directive principle and neither of them is directly enforceable. If a citizen of India goes to the court to enforce either of them, then they are not enforceable. Clearly लिखा है Article 37 में. लेकिन अगर स्टेट खुद as a matter of choice law बनाकर इन policies को implement करना चाहे, then the state can do that. What I am trying to tell you that on the one hand you have given the right to property and which is inviolable as per article 13 clause 2, and on one hand the larger goal of the constitution is to bring about the equal distribution of the wealth and equal distribution of resources. If you go for the equal distribution of wealth and resources, and the state has the duty to do it 37, and if the state goes for that, then will not it restrict the right to property of the people? अगर आपको equal distribution of wealth करना और redistribution of land करना है, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों के right to property को तो affect करना पड़ेगा. अब अगर आप कहते हो DPSP is useless, तब तो आप right to property को rigidly देखेंगे और right to property को affect नहीं कर सकते. लेकिन अगर आप कहते हो DPSP is also equally important and it should be fundamental in the governance of the country, then DPSP को भी promote करना is equally important for the whole of the constitution and equally important duty of the state. And fundamental rights को protect करना is also the equal important duty of the state. So इस तरीके के situation में state has to on one hand ensure
equal distribution of the wealth, somewhat equal distribution of wealth, जितना state achieve कर सके. On the other hand, the state has to ensure that the fundamental rights should not be violated. तो ये दोनों सिचुएशन परस्पर विरोधी हो गई कि नहीं हुई? जैसे ही इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ के लिए जाओगे आपको लैंड एक्विजिशन करना पड़ेगा, और जैसे लैंड एक्विजिशन करोगे आप तो फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगा. अब जिस समय हमको इंडिपेंडेंस मिला था और जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था, ध्यान से सुनिएगा, देन द फर्स्ट 5 year प्लान वाज टू बी इम्प्लीमेंटेड. अब फर्स्ट 5 year प्लान में बेसिकली इट वाज एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट along with the infrastructure, but infrastructure उस समय बहुत कम था, basically focused on the agricultural development. So first 5 year plan में they have to bring for the agricultural development. अब agricultural development दो तरीके से होता है, एक institutional development और एक infrastructural development. एक तो institutional development से होता है और दूसरा infrastructural development से. Infrastructure जैसे canals, seeds, canals, etc. दूसरा institutional, that is related to land holdings. अब unless we bring about the institutional development, we will not able to bring about the larger change in the agricultural pattern in India. A person having 1000 or 2000 acre of land will not be as much concerned of doing agriculture as much properly because he does not need that much of income. He would be take pride of that fact that I am having that much of land, and he would do the exploitation of the landless laborers, landless farmers. If we redistribute the lands to the needed farmers, then they will have a small chunks of lands and they go for best of doing their agriculture. Plus land consolidation was also required. लैंड सीलिंग तो था ही, लैंड कंसोलिडेशन की भी जरूरत थी. सो हमारे फर्स्ट 5 year प्लान में था एग्रीकल्चर को प्रमोट करना और साथ में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करना. फिर उसी के साथ हमारी पॉलिसी थी नेक्स्ट प्लान्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट्स. अब एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हमको कैनाल बनाने की जरूरत थी, लैंड होल्डिंग को कंसोलिडेट करने की जरूरत थी, लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन करने की जरूरत थी, साथ में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रेलवेज, एग्रीकल्चरल ट्रांसपोर्ट का जो रिक्वायरमेंट है, गुड्स ट्रेन, रेलवेज, ऑल दैट हैव टू बी डेवलप, और उनके लिए लैंड चाहिए था. सो दैट वाज द टारगेट फॉर द first 5 year plan. So the agricultural development equal distribution of wealth is the part of the DPSP and it is the duty of the state to do. So state has to bring about the agricultural reforms in the agriculture sector, and on the other hand the state has to ensure that the right to property is not violated, and it will not bring about the any institutional reforms unless लैंड टेन्योर सिस्टम वाज चेंज्ड. तो जमींदारी सिस्टम को अबॉलिश करके या फिर कर्टेल करके हमको लैंड टेन्योर सिस्टम को चेंज करना जरूरी था, अदरवाइज इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स सब नहीं कर सकते थे. इसीलिए हमने बहुत सारे ऐसे लॉज बनाए. इसीलिए हमने बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट या मैनी अदर सिमिलर लॉज भी पास किए. पॉलिसी वाज द पॉलिसी ऑफ 39B and C, द पॉलिसी ऑफ 38 clause 1, 38 clause 1, 39B and C, एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, इन सबको प्रमोट करने के लिए we had to go for change of the land tenure system and we had to acquire the extra land of the princely state and also of the zamindar. That is quietly in keeping with the larger constitutional goals, because without agricultural development we cannot move ahead. अब तो हमारे पास काफी रिसोर्सेज हो गई, फैक्ट्रीज हो गई हैं, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज, IT इंडस्ट्रीज, बट एट दैट टाइम आफ्टर इंडिपेंडेंस we only having the main source of income by the agriculture only, and the progress of the nation is important. क्योंकि अगर काफी सारे जमींदार हैं, उन पर जमीन बहुत ज्यादा है, तो वो केयरलेस होंगे, प्रोड्यूस कम होगा कंट्री में, तो कंट्री की ग्रोथ भी कम होती. और उस टाइम इतने इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं थे. विदाउट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स लाइक पावर प्लांट, डैम्स, हमारी कंट्री की प्रोग्रेस नहीं हो सकती थी. इसलिए हमको उस डेवलपमेंट को अचीव करना था, और उस डेवलपमेंट को करने के लिए पहली रिक्वायरमेंट जो हमारी थी दैट इज एक्विजिशन ऑफ लैंड. क्योंकि पहले सरकारी जमीन तो थी नहीं, प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसेस के पास थी, और जमींदार सिस्टम था तो जमींदारों के पास थी. तो जब जमीन नहीं होगी डेवलपमेंट कैसे होगा कंट्री में. सो देयरफॉर मेकिंग ऑफ द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट्स और सिमिलर एक्ट्स इज क्वाइट प्रॉपर. But the moment you make the law, Article 13 clause 2 comes as an obstructions, because the moment you making law, you acquiring the land, and the moment you acquire the land, the right to property get affected or not. Yes, and therefore there is conflict.
अब ये सोचने वाली बात है, नेशनल प्रोग्रेस के लिए ये जरूरी था कि लैंड एक्विजिशन हो, और इंडिविजुअल का फंडामेंटल राइट प्रोटेक्ट करने के लिए ये जरूरी था कि उसके फंडामेंटल राइट को एडवर्सली अफेक्ट ना किया जाए. सो दिस वाज द कॉन्फ्लिक्ट व्हिच वाज देयर in the Patna High Court in the Kameswar Prasad Singh case, and the Patna High Court went for the literal interpretation. 13 clause 2 prohibits, 39 etc. are not enforceable, and therefore the prohibitionary provision prevails, and therefore these laws are unconstitutional. So this is what the High Court says कि 13 clause 2 कहता है कि आप right to property violate नहीं कर सकते, और आर्टिकल 32 के थ्रू वो एनफोर्सेबल है. आर्टिकल 13 क्लॉज 2 के थ्रू वो एनफोर्सेबल है, जबकि डीपीएसपी एनफोर्सेबल नहीं है. तो ज्यादा सुपीरियर कौन हो गया? फंडामेंटल राइट. इस बेसिस पर पटना हाई कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया दैट इररेस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर पॉलिसी यू हैव ऑफ डीपीएसपी, द फंडामेंटल राइट इज सुपीरियर एंड देयरफॉर यू कैन नॉट टेक अवे द राइट ऑफ प्रॉपर्टी. अब अगर ये जजमेंट प्रिवेल कर जाता तो फिर हम एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म कर ही नहीं सकते थे, हम इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट कर ही नहीं सकते थे. अब कई जगह ऐसा हुआ कि किसी के लैंड है और उधर से नहर बनानी है, कैनाल बनाना है, बिकॉज ऑफ द इरिगेशन सिस्टम. क्योंकि पानी जाएगा कैनाल के थ्रू तो वी वुड कवर द लार्जर एरिया ऑफ लैंड ऑफ फर्टिलिटी. ज़्यादा फर्टिलिटी होगी, ज़्यादा क्रॉप्स होंगी और ज़्यादा पैदा होगी, तो देश में तरक्की होती. एंड लार्जर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया स्टिल नाउ इज डिपेंडेंट ऑन द एग्रीकल्चर. और ये तभी पॉसिबल है जब हम ग्रोथ करें एग्रीकल्चर में, फर्टिलिटी इंक्रीज करें, एंड वी वुड प्रोवाइड द मोर सोर्स ऑफ इनकम टू द फार्मर्स. अब अगर लैंड एक्विजिशन नहीं करेंगे तो हाउ इट वुड बी पॉसिबल. ये तो उस समय की स्थिति थी. अब की स्थिति अगर ग्राउंड लेवल पर जाकर देखें, कैनाल्स बन भी गई हैं, उनमें काफी टाइम से पानी आता था इरिगेशन का. कई कैनाल्स तो ऐसे हैं जिसमें कई सालों से at the stage of due to political reasons, local political reasons, उस कैनाल में जब जरूरत होती है इरिगेशन में, जैसे राइस का एग्रीकल्चर करने का टाइम आया तो उस समय कैनाल में पानी देना ही बंद कर देती है गवर्नमेंट, मोस्टली इन द रेनी सीजन. और रीजन बताया जाता है दैट द सिल्ट विल कम विद द वाटर फ्रॉम द मेजर रिवर्स लाइक यमुना और गंगा, तो वो आएगा और एंड इट विल फिल द कैनाल्स. अब अगर इस क्वेश्चन को उस समय से हम रिलेट करें तो एट दैट टाइम जब हमने लैंड एक्वायर किया गया था तब क्या जरूरत नहीं थी किसी के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने की. अब उस समय हमने चेंजेस कर कर कैनाल्स बनवाए, और नाउ जब वेरियस फंडामेंटल राइट्स ऑफ वेरियस पर्संस गॉट अफेक्टेड, राइट टू लाइफ, क्योंकि उन कैनाल्स वो सूखे पड़े और पानी नहीं आता क्रॉप्स के समय. और सिल्ट तो ऐसी चीज है दैट कुड बी टेकन ऑफ बाय द जेसीबीज, उनकी सफाई हो सकती है, उनको रिकंस्ट्रक्ट किया जा, कैनल को दोबारा मट्टी निकाल के बनाया जा सकता है आफ्टर द रेन. और एक तरफ कैनल्स में पानी नहीं छोड़ते, दूसरी तरफ जब ओवर फ्लो हो जाती है नदी, देन फ्लड आती है कई एरियाज में. इट विल अफेक्ट द राइट फंडामेंटल राइट्स ऑफ द अदर पीपल ऑल्सो. सो फॉर नाउ लीव दिस टॉपिक. सो मेन हमारा पॉइंट था कि कैनाल्स बनाए गए क्योंकि पानी की व्यवस्था नहीं थी, और पानी की व्यवस्था तभी हो सकती थी जब कैनाल्स हों और उनमें पानी हो, तभी हमारी इरिगेशन स्मूथ तरीके से हो सकती थी. सो कैनाल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इरिगेशन एंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर सिस्टम इन आवर इंडिया. जितना इम्पोर्टेंट कैनाल है उतना ही इम्पोर्टेंट उसके अंदर पानी रहना है, बिकॉज विदाउट वाटर देयर द कैनाल्स आर यूजलेस. कैनाल्स आर नॉट फॉर carrying the dirty water from the cities. The major purpose of canals at that time was to irrigate the lands. So किसी के अगर फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं, किसी की पर्टिकुलर थोड़ी बहुत जमीन जा रही है, तो अदर पर्सन जो मेजर पॉपुलेशन है, they get benefiting from this. So for the larger goal, larger purpose, you have to acquire the land. But now we are talking about the fundamental right of that person whose land is acquiring. तो एक तरफ तो उसको फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है और एक तरफ डीपीएसपी को एनफोर्स करा रहे हैं. तो एक तरफ हमको राइट टू प्रॉपर्टी कर्टेल करना पड़ रहा है टू एनफोर्स द डीपीएसपी. सो फॉर दैट वी हैव टू ड्रॉ ए मिड लाइन, क्योंकि दोनों चीज एक साथ नहीं हो सकती. राइट टू प्रॉपर्टी भी रहे और डीपीएसपी भी एनफोर्स हो जाए. सो वी हैव टू ड्रॉ ए मिड लाइन. कामेश्वर प्रसाद सिंह के केस में
कोर्ट ने मिड लाइन नहीं बनाया और सीधा 13 क्लॉज 2 के बेसिस पे कह दिया दैट दिस थिंग इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, दिस लॉ इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अब पार्लियामेंट के सामने एक प्रॉब्लम अरोज हो गया। पार्लियामेंट न्यू दैट वी हैव क्रिएटेड द फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी एंड साथ में इट आल्सो न्यू that we have to go for the implementation of these policy DPS, otherwise how will we achieve the progress of the nation। पार्लियामेंट को ये भी पता था कि फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी हमने मजबूरी में दिया है, आज तो नहीं है फंडामेंटल राइट, आज तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है बस, आर्टिकल 300A, तो हमने हटा दिया उसको। क्यों हटा पाए? बिकॉज दैट वाज नॉट एज इम्पोर्टेंट एज राइट टू इक्वालिटी एंड राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर उस समय फंडामेंटल राइट्स हम गारंटेड नहीं करते तो कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो प्रिंसली स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, जमींदार थे, वो कॉन्स्टिट्यूशन को पास नहीं होने देते, बिकॉज देयर वाज मेनी सच मेंबर्स who are zamindars and who are the princes, and they were all the members of the constituent assembly. They would not have voted in favor of the constitution had the fundamental right to property be guaranteed, and therefore in order to appease them to have the constitution been passed, the Dr. Ambedkar very smartly what he done it was he got the right to property declared। तो वो साहब खुश हो गए कि हाँ हमारी राइट टू प्रॉपर्टी है, और 13 क्लॉज 2 भी डाल तो और भी खुश हो गए, लेकिन चुपके से साथ में DPSP भी डाल दी, 39BC वगैरह चुपके से क्या दिखाकर ही डाला, लेकिन उनको अपीज करने के लिए क्या किया, ये दिखा दिया कि दैट इट इज नॉट इन्फोर्सेबल। तो वो खुश हो गए क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी है तो इट इज नॉट इन्फोर्सेबल, कोई ले नहीं सकता प्रॉपर्टी। लेकिन इधर फंडामेंटल इन द मैटर ऑफ गवर्नेंस लिख दिया और ड्यूटी ऑफ द स्टेट भी डाल दी। बट उनको उस टाइम क्या पता था जमींदार्स को कि बाय वे ऑफ इंटरप्रिटेशन इट विल चेंज द सिनेरियो, एंड दैट इज व्हाट हैपेंड। अब द प्रॉब्लम वाज विद द पार्लियामेंट कि हमको इम्प्लीमेंटेशन करना है DPSP का। वी नीड टू एक्वायर लैंड फॉर द डेवलपमेंटल पर्पसेस। कई बार नेसेसिटी पर्पसेस के लिए भी हमको लैंड एक्वायर करना पड़ जाता है स्टेट नेसेसिटी के लिए, तो वो गवर्नमेंट कर नहीं पाएगी क्योंकि 13 क्लॉज 2 वायलेट हो। तो अब उन्होंने क्या किया, दे थॉट के 13 क्लॉज 2 की वजह से वी आर नॉट एबल टू इम्प्लीमेंट, तो हम फंडामेंटल राइट के चैप्टर में ही एक सेविंग क्लॉज डाल दें, देन दैट विल बी as good as Article 13 clause 2. 13 clause 2 prohibits that you cannot affect the fundamental right, and if you put a clause in the fundamental rights chapter itself that in so and so case you can affect Article 19 and 40. So 13 clause 2 has to be read along with that. So 13 clause 2 absolute नहीं रह जाएगा, बल्कि if the matter falls in the saving clause 13 clause 2 will not be affected. 13 clause 2 अभी तो absolute, you cannot take away with the fundamental right, but if you put a saving clause somewhere then in those matters 13 clause 2 will not apply, and therefore what they did was they made the amendment of the constitution in the first amendment in which they wrote 31A 31B and they also added the 9th schedule। अब ये उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया है। 31A and 31B is the part 3 फंडामेंटल राइट्स पार्ट। अब 13 क्लॉज 2 भी है और 31A और 31B भी है। व्हाट इज 31A and 31B? These are saving clauses. They are clearly saying that if the state makes law for the compulsory acquisition of land, initially जो था, if the state makes a law for the compulsory acquisition of land, and overall the meaning was it was for the purpose of development, for the progress of the nation, then nothing in Article 13 will affect that law। अब किसी डेवलपमेंट पर्पज के लिए आप अगर लॉ बनाते हो दैट विल फॉल अंडर 31A, एंड 31A क्या कह रहा है, नथिंग इन 13 विल अफेक्ट दैट लॉ। मतलब 13 क्लॉज 2 को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया एंड देयरफॉर द लॉ विल नॉट बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल। तो हमने बाय सेविंग क्लॉज वी हैव क्रिएटेड दैट सिचुएशन, बाय सेविंग क्लॉज दे क्रिएटेड दैट सिचुएशन। तो अब हम अगर डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट की बात करें तो बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट इज for the purpose of institutional development in agriculture, that is for the developmental purpose, and therefore the compulsory acquisition of land by the Bihar Land Reform Act will now be saved by Article 31A, and 31A clearly says that nothing in Article 13 will affect that, means what, 13 clause 2 will not render that law unconstitutional। साथ में हम उस लॉ को अगर if we put that law in 9th schedule, बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट को हम 9th शेड्यूल में डाल देते हैं, तो 31B क्या कहता है, 31B क्लियरली से दैट लॉ विल गो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, मतलब कोर्ट के सामने उसको क्वेश्चन मार्क में डाला ही नहीं जा सकता। दैट लॉ इज अनचैलेंजेबल एंड देयरफॉर द बिहार लैंड रिफॉर्म एक्ट एंड एनी सिमिलर लॉ विल गेट प्रोटेक्टेड। तो होगा क्या, डेवलपमेंट पर्पज के लिए, फॉर डेवलपमेंट पर्पजेज वी कैन एक्वायर लैंड एंड द राइट टू प्रॉपर्टी इवन इफ इट गेट इफेक्टेड
that law will not be. But otherwise, if we acquire land, the right to property is protected because 31A will not apply, and the right to get property protected, 13 clause 2 will apply, and the law will be unconstitutional. So that is the midway that is tried to be created by the parliament कि हम डेवलपमेंट पर्पसेस के लिए लैंड रिफॉर्म एक्ट बना सकते हैं फॉर द कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड और कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड कर सकते हैं. 31A is also a part of part 3, so 31A will also have the same effect. 31A में उसको प्रोटेक्ट करो, 9 शेड्यूल में डालकर 31B में उसको प्रोटेक्ट करो, 13 क्लॉज 2 नहीं लगेगा, एंड देयरफॉर द लॉ इज वैलिड. लेकिन अगर विदाउट एनी डेवलपमेंट पर्पस अगर लैंड एक्वायर करते हो किसी का, देन 31A and 31B will not apply, and the law is hit by 13 clause 2 and will be unconstitutional. That was the agenda of the first amendment. अब इसके बाद क्या हुआ, पार्लियामेंट ने 31A, 31B और 9 शेड्यूल बना लिया. Now what they do is they challenge the very first amendment. अब उन्होंने फर्स्ट अमेंडमेंट को चैलेंज कर दिया और ये कहा that the 13 clause 2 when it says that fundamental rights cannot be abridged or takes away, so it is not with respect to the ordinary laws, it is also with respect to the amendments of the other amendments of the constitution, because article 13 clause 2 is taking away or abridging the fundamental rights. Then how come you will amend these articles, you amend and add these articles, are they not violating the article 13 clause 2? 31A 31B क्या कह रहा है कि 13 clause 2 के होते हुए भी even if a law violates the fundamental rights it is valid, यही तो बोल रहा है. Then is it not restricting 13 clause 2, is it not restricting the fundamental rights 31A and 31B, and therefore by the amendment are you not putting an article in the constitution which is violating article 13 clause 2 directly? क्योंकि उनका कहना है आर्टिकल 13 क्लॉज 2 एब्सोल्यूट है, तो ना तो आप कोई लॉ बना सकते हो फंडामेंटल राइट्स को रेस्ट्रिक्ट करने वाला, और ना ही आप कोई अमेंडमेंट कर सकते हो जिससे फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट का स्कोप क्लियर होता हो, स्कोप ओपन होता हो. सो ये जो अमेंडमेंट आपने किया है वो भी फंडामेंटल राइट्स के रेस्ट्रिक्शंस का स्कोप ओपन कर रहा है. दिस अमेंडमेंट ऑल्सो इज unconstitutional because you cannot violate article 13 clause 2 in any circumstances. Why they are saying this? Because 31A and 31B are opening the scope for restriction of article 90 and article 14, and 13 clause 2 is prohibited of that. So even if you are saying that nothing in 13 will apply upon such law, you cannot say so because 13 clause 2 is absolute, and even by amendment you cannot create that kind of restrictions. So the question before Supreme Court in Shankri Prasad was as to whether Article 31A and 31B and 9 schedule, which was added by the First Amendment, whether they are taking away or restricting the fundamental right. Answer is yes. It is on the face of it violative of Article 13 Clause 2. Answer is yes. So whether the amendment by which these articles are introduced, whether that amendment itself is unconstitutional. अब 13 Clause 2 सुनिएगा. 13 Clause 2 कहता है that the state cannot make any law taking away or abridging the fundamental rights. And when you make an amendment, is it not an amendment of law? So have you not made a law which takes away or abridges the fundamental right? That was the contention in Shankri Prasad judgment. That have you not made a law, because amendment भी एक law ही है ना. So they said that have you not made a law which is restricting the fundamental rights? How 31A and 31B is restricting the scope of 13 clause 2, and it is allowing the violation of 19 and 14 to an extent in the cases of progressive legislation. So there they take the contention that ये भी तो लॉ होगा. आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में जो लॉ लिखा है तो ये 31A B भी तो लॉ है, एंड देयरफॉर इट शुड आल्सो बी अनकॉन्स्टिट्यूशनल. और सुप्रीम कोर्ट को उस समय ये पता था कि आज अगर मैंने जजमेंट दे दिया कि दैट this is also law, amendment is also law, and therefore 31A and 31B are unconstitutional because amendment is also law. Supreme Court very well knew that once this judgment is passed, means what, compulsory acquisition of land cannot take place, and therefore all the development projects will be shut down. Reason being, बिना लैंड के हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो नहीं कर सकते, और हमने अगर जजमेंट पास कर दिया दैट द फर्स्ट अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो लैंड रिफॉर्म एक्ट और या फिर ऐसा कोई भी लॉ बना पाना पॉसिबल नहीं होगा. सो सुप्रीम कोर्ट गेव ए वेरी फार साइटेड जजमेंट इन दिस केस. फार साइटेड कैसे?
बिकॉज एक तरफ अगर फंडामेंटल राइट इम्पोर्टेंट है तो दूसरी तरफ लार्जर गोल्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट भी तो इम्पोर्टेंट है। अब फंडामेंटल राइट के चक्कर में हम डिक्लेयर कर दें फर्स्ट अमेंडमेंट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो फिर तो लैंड एक्वायर करना पॉसिबल ही नहीं होगा। एंड इफ द acquisition of land is not possible, and if the acquisition of land is not possible, so the progress of nation will stop, and therefore the Supreme Court and logic also behind that the parliament can make two kinds of law. One law is normal legislation, जैसे बिहार लैंड रिफॉर्म्स एक्ट, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जैसे फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, इस तरह के लॉ, डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट, दीज आर नॉर्मल। दूसरा जो लॉ है जिसमें पार्लियामेंट और जो दूसरे तरह के लॉ होते हैं जिसमें पार्लियामेंट अमेंड्स द कॉन्स्टिट्यूशन, द कोर्ट हेल्ड that the law which amends the constitution, that is not an ordinary law, that is a superior law, and the word law used in article 13 clause 2 is related to ordinary legislation. Therefore the restriction of article 13 clause 2 will apply upon ordinary legislation. जैसे मान लो फूड अडल्ट्रेशन एक्ट किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। अगर डॉरी प्रोहिबिशन एक्ट किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट करे वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा। लैंड रिफॉर्म एक्ट किसी फंडामेंटल राइट को वायलेट कर, लैंड रिफॉर्म एक्ट एज सच वो भी तो लॉ है, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो। लेकिन अगर कोई अमेंडमेंट किसी फंडामेंटल राइट को रेस्ट्रिक्ट करता है तो वो अमेंडमेंट अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, बिकॉज लॉ ऑफ अमेंडमेंट इज नॉट एन ऑर्डिनरी लॉ। अब अमेंडमेंट करके 31A डाला और लैंड रिफॉर्म एक्ट को 31A के अंदर क्रिएट किया तो वो लैंड रिफॉर्म एक्ट भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा, बिकॉज इट इज सेव्ड बाय आर्टिकल 31A एंड Article 31B. So the simple point was, since the law of amendment by the Constitution is not an ordinary legislation, it is a superior law, it will not be hit by the restriction of Article 13 Clause 2. Since the amendment of Constitution is a superior law and not an ordinary legislation, it will not hit by Article 13 Clause 2 because 13 Clause 2 only refers to ordinary legislation, and therefore the first amendment is कॉन्स्टिट्यूशनल। देयरफॉर आप कोई भी अगर लॉ बनाते हो फॉर द कंपलसरी लैंड एक्विजिशन, so that will be protected under 31A and 31B, and if it is protected then it will not hit by 13 clause 2 and it is valid. So this is the entire context in which this entire incident happened. अब उसके बाद क्या हुआ, इसी फर्स्ट अमेंडमेंट के अंदर 31A and B के अंदर उन्होंने इस बीच में काफी सारे लॉज बनाए, लैंड रिफॉर्म लॉज, और कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट करके 17th अमेंडमेंट करके उन्होंने बहुत सारे लैंड रिफॉर्म लॉज 9th शेड्यूल में डाल दिए। दैट इज हाउ दे डू। कई सालों तक वो लैंड रिफॉर्म एक्ट बनाते रहे और उसके बाद कई एक साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वो लॉज 9th शेड्यूल में डाल दिए, सो एज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम द जुडिशियल रिव्यू, एंड दीज आर ऑल प्रोग्रेसिव लॉज। अगेन देयर वाज ह्यू एंड क्राई, क्योंकि जुडिशियल रिव्यू का स्कोप खत्म कर दिया, क्योंकि 31A एंड 31B के अंदर डाल दिया लॉ को। सो द अगेन द सेम क्वेश्चन वेदर द 17th अमेंडमेंट व्हिच हैज पुट दोज लॉ इनटू द 9th शेड्यूल and has brought out of the scope of the judicial review, and hence the first amendment was constitutional or not, क्योंकि फर्स्ट अमेंडमेंट में तो 9th शेड्यूल बनाया था। सो दैट वाज अगेन ए क्वेश्चन। तो पहले तो शंकरी प्रसाद जजमेंट था ही हमारे पास, सज्जन सिंह जजमेंट में, इस जजमेंट में 1964 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर वही बात कही, दैट लॉ ऑफ अमेंडमेंट इज ए सुपीरियर लॉ एंड देयरफॉर इट विल नॉट हिट बाय आर्टिकल 13 क्लॉज 2, and hence they held the first amendment and the 17th amendment constitutional. तो ये क्रिएट करता है एक डायपटोमी सिचुएशन बिटवीन द डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट। तो ये जो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के बीच में डायपटोमी है उसका क्या होगा, क्योंकि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना जरूरी है और डीपीएसपी है उसको भी एनफोर्स करना जरूरी है, बिकॉज टू एनफोर्सिंग द डीपीएसपी इट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी ऑफ द स्टेट। सो बाय द मैटर ऑफ फैक्ट अगर 39B और C को अगर प्रमोट करोगे तो 19(1)(f) को रेस्ट्रिक्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज कंपलसरी एक्विजिशन करोगे तो राइट टू प्रॉपर्टी हैज टू गेट अफेक्टेड, एंड दैट इज वेयर द कॉन्फ्लिक्ट लाइज। दैट कॉन्फ्लिक्ट इज डन अवे विद बाय मेकिंग ए मिडवे पाथ। अगर डेवलपमेंट पर्पस के लिए लैंड एक्विजिशन कर रहे हो देन बाय द फर्स्ट अमेंडमेंट 31A 31B एंड 9th शेड्यूल द लॉ विल बी प्रोटेक्टेड देयर एंड राइट टू प्रॉपर्टी कैन बी रेस्ट्रिक्टेड, बट अदरवाइज इफ यू वांट टू टेक अवे द प्रॉपर्टी then the right to property would not be restricted because that law will not fall under 31A and 31B. तो अभी तक सब अच्छा चल रहा था, अभी तक so many lands, so many chunks of lands were acquired, redistributed to the people, काफी सारा डेवलपमेंट कर लिया था गवर्नमेंट ने, इंफ्रास्ट्रक्चर का, डैम्स, रोड्स, रेलवे लाइंस। अब मैटर पहुंचा गोलकनाथ जजमेंट में बिकॉज ऑफ
क्योंकि शंकरी प्रसाद में और सज्जन सिंह में दोनों का बेंच का स्ट्रेंथ सेम था, तो दोनों में कहीं देयर इज काइंड ऑफ अनसर्टेनिटी का एलिमेंट इन सम अदर जजमेंट्स आल्सो, देयरफॉर द मैटर वाज रेफर्ड टू ए लार्ज बेंच ऑफ 11 जजेस। इस पॉइंट को रेफर किया इन्होंने 11 जजेस बेंच के पास, और उस जजमेंट में सुब्बाराव चीफ जस्टिस ने जजमेंट दिया था 6-5 मेजोरिटी के साथ। दैट वाज गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, दैट इज इन 1967। सो उसके बाद गोलकनाथ वाला जजमेंट आया था और इसमें कोर्ट ने हैंड किया था अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट ए ऑर्डिनरी लॉ, इट इज सुपीरियर लॉ, बट ऑन व्हाट बेसिस इट सेज it is not an ordinary law, so it has to be discussed, and we would discuss it into the next lecture. So that's it for this lecture. Thank you for watching this lecture.